2012 में एक रियल एस्टेट एजेंट ने सूर्यकांत पर कैश ट्रांजैक्शन और अंडर वैल्यूएशन के आरोप लगाए। 2017 में पंजाब जेल के एक आरोपी ने भी रिश्वत के आरोप लगाए। हालांकि ये आरोप कभी साबित नहीं हुए, लेकिन कॉलेजियम में इन शिकायतों की फाइलें जरूर घूमती रहीं और फिर भी प्रमोशन रुकता नहीं गया। यही वजह है कि लोग कहते हैं सूरज की रोशनी तेज है, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ छाया भी है। दोस्तों, अब कोर्ट रूम में सूरज उगने वाला है। नाम है जस्टिस सूर्यकांत। हाँ, वही सूर्यकांत जो जल्द ही भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ उपलब्धियों की नहीं, विवादों की भी है। हरियाणा की अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक उनका सफर उतना ही दिलचस्प है जितना संवेदनशील। अब सवाल यह है, क्या यह सूरज न्याय की रोशनी फैलाएगा या विवाद की तपिश बढ़ाएगा? जस्टिस सूर्यकांत ने करियर की शुरुआत 2004 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से की। 2018 में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने और 2019 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि उन्हें कई बार सीनियर जजों को पार करके प्रमोशन मिला और यही से विवादों की नई सुबह हुई। जब ए.के. मित्तल को पीछे छोड़कर सूर्यकांत को नियुक्त किया गया तो खुद सुप्रीम कोर्ट जज ए.के. गोयल ने आपत्ति दर्ज कराई थी। सवाल उठा कि क्या ये योग्यता की जीत थी या सिस्टम की पसंद। अब आते हैं उनके सबसे चर्चित मामलों पर। पंजाब का एसवाईएल नहर विवाद, जहां राजनीति और कानून का पानी एक साथ बहता दिखा। फिर आया मनी बिल बनाम इलेक्शन बॉन्ड्स का मसला, जिसमें फैसला अब उनके सामने होगा। और सबसे रोचक रहा बिक्रम मजीठिया एनडीपीएस केस, जिसमें उन्होंने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया क्योंकि वो पहले उस जांच से जुड़े थे। एक तरफ ये कदम ईमानदारी का प्रतीक माना गया तो दूसरी तरफ पूर्वाग्रह का संकेत भी। 2012 में एक रियल एस्टेट एजेंट ने सूर्यकांत पर कैश ट्रांजैक्शन और अंडर वैल्यूएशन के आरोप लगाए। 2017 में पंजाब जेल के एक आरोपी ने भी रिश्वत के आरोप लगाए। हालांकि ये आरोप कभी साबित नहीं हुए, लेकिन कॉलेजियम में इन शिकायतों की फाइलें जरूर घूमती रहीं और फिर भी प्रमोशन रुकता नहीं गया। यही वजह है कि लोग कहते हैं सूरज की रोशनी तेज है, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ छाया भी है। उनकी कार्यशैली भी अलग है, ना बहुत सख्त ना बहुत मुलायम। कोर्ट में वो अक्सर तंज के साथ बात करते हैं। उन्होंने एक बार कहा था, कानून का डर रहना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि इंसाफ डर जाए। पर कई बार फैसलों में देरी ने उन्हें आलोचना का शिकार बनाया। अब जब वो 15 महीनों के लिए देश के सबसे ऊंचे न्यायासन पर बैठने जा रहे हैं, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि वो न्यायपालिका की छवि कैसे सुधारते हैं। उनका कार्यकाल छोटा है, सिर्फ 15 महीने, लेकिन इन महीनों में आने वाले केस इतने भारी है कि उनका एक फैसला संसद से सुप्रीम कोर्ट तक बहस का विषय बन जाएगा। जम्मू कश्मीर का डिलिमिटेशन, इलेक्शन बॉन्ड्स, जजों की नियुक्ति, सब उन्हीं के सामने आने वाले हैं। पर सवाल यही रहेगा, क्या वो न्याय के सूरज बनेंगे या विवादों के ग्रहण में फंस जाएंगे? कॉलेजियम सिस्टम पर उनकी राय भी दिलचस्प रही है। पहले वो इसके आलोचक माने जाते थे, लेकिन अब जब खुद मुखिया बनने जा रहे हैं तो देखना होगा कि क्या राय बदलती है। आखिरकार भारत में सिस्टम के खिलाफ बोलना आसान है, लेकिन सिस्टम का हिस्सा बनकर सुधार करना मुश्किल। जनता का भरोसा अब उन पर टिका है। आज लोग न्यायपालिका से जवाब मांग रहे हैं, न सिर्फ फैसलों पर बल्कि उस चुप्पी पर जो न्याय से बड़ी हो गई है। सूर्यकांत के लिए ये मौका है कि वो दिखाएं कि अदालत सिर्फ फैसले नहीं देती, उम्मीद भी जिंदा रखती है। उनके समर्थक कहते हैं वो मेहनती है, निष्पक्ष है और सोचते हैं अलग ढंग से। लेकिन आलोचक याद दिलाते हैं कि कई विवादों की फाइलें अभी भी बंद नहीं हुई और यही विरोधाभास शायद उनका सबसे बड़ा टेस्ट होगा। तो दोस्तों, कहानी यही है, एक सूरज उगने वाला है, लेकिन उसके साथ सवालों का अंधेरा भी है। जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल अब न्यायपालिका के लिए ट्रायल पीरियड जैसा होगा और जैसा कि न्यूज नशा कहता है, सवाल सिर्फ ये नहीं कि फैसला कौन देगा, सवाल ये है कि अब फैसला जनता देखेगी या फिर इतिहास। मिस्टर राकेश खन्ना, सीनियर एडवोकेट, प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। रिस्पेक्टेड मीनाक्षी जी, सीनियर एडवोकेट। श्री शर्मा, सीनियर एडवोकेट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द बार एसोसिएशन।
other office bearers of the Supreme Court Bar Association, senior advocates, and members of the bar. I am thankful to the Supreme Court Bar Association for giving this opportunity to exchange the ideas on a subject which is very close to our hearts. Whether the lawyers or judges, we all are concerned about the access to justice. What was begun with by Shri Khanna, Meenakshi ji concluded with a very deep insight of the constitution and judgment of this court, explaining the very concept of access to justice, what are its ingredients, and what is required to be done to achieve this loud goal. The question of wanted infrastructure, the question of requisite strength of the judges to meet with the judge litigation ratio, the question of geographical distance, which has become a stronger factor to dissuade the litigant to come and approach the judicial forms, and several other issues which have been really identified as the barriers for the access to justice have been very well explained by Meenakshi ji. Therefore, I need not to repeat all those issues. As you know it, the Roman saying that whenever there is a wrong, there has to be a remedy is the foundation basis when the concept of access to justice started developing. 1948 Human Rights, International Human Rights Declaration, and eventually followed by our own constitution through Article 39A. Several legislations, Legal Service Authorities Act, Constitution of Nalsa, State Legal Service Authorities, and going up to taluka level, appointments of, very briefly I am pointing out, even the paralegal volunteers and what not and what else. All these efforts have been made to achieve this goal of access to justice. I had a special privilege to work for 2 consecutive terms as a member of the Managing Committee of NALSA from 2007 to 2011, and you will find that most of the schemes formulated by NALSA are notified in 2010. I did contribute in formation of those schemes, but I am not on that academic concept of the access to justice. The last point which Meenakshi ji raised before you, the most pertinent point, that where and how are we going wrong in translating this concept into reality? Where are we lacking in practical terms that the concept of access to justice is still being discussed in workshops, seminars, lectures, in auditoriums? Why it has not reached to the general masses? And what are those actual barriers and how to deal with that? She very aptly pointed out and made a appeal to all of you that the lawyers need to come out, pro bono services, even young lawyers who can be funded from different sources, and they can provide a kind of paid but free legal aid to the
set of litigants who, because of the economic constraints, are unable to approach the legal forms. There is no doubt about it that free legal aid, accessible justice system, and equality in terms of no difference between poor or rich, workman or industrialist, employer or employee, all these are fundamental to the concept of access to justice. But then my personal viewpoint is that we are lacking in commitment. And unless you are committed to a cause, regardless of the best of the infrastructure which is made available, regardless of all other requirements are taken care, funds provided, you may not be able to achieve the desired result. On illustrative basis, I will just give you one example. I have been also the executive chairman of the State Legal Service Authority, and it was not that Legal Service Authority alone as an exception. I am talking all India basis, pan India. There are more than adequate funds being provided by the central government to legal service authorities for the purpose of engaging good quality advocates, pay them a reasonable amount of fee, where only NALSA has prescribed the minimum one, and ensure that the trust and faith of the litigant who is not in a position to afford legal services of the private lawyer, that is restored and built up, and they are also attracted to engage the legal services, legal aid, the advocate of their choice through the platform of legal services. And practically and factually what's happening is that many legal service authorities are unable to utilize the fund, and there is an annual return. The amount is returned to the state governments or the central government or the other agencies from where it comes, all government agencies only. My personal very strong view is that the concept of access to justice, legal aid, legal services cannot be implemented mechanically through rule books or through prescription. It has to be imbibed in the mindset, and there has to be a commitment by individuals forming a group and then take it and lead it as a movement. Access to justice actually is a very innovative idea. Where, how, in what circumstances, and what type of access to justice you need has to be invented and seen and implemented, translated then and there. There are situations where as a advocate, as a counsel for the party, or as a judge, if you start perceiving yourself to be bound down by the rule book, and if you continue to involve yourself in the adjudicatory process, keeping in view in mind the litigant who is before you, or the brief or the file which is before a judge, mind you, it may lead to gross violation of access to justice. May not be to that litigant, but to thousands or hundreds or so many other individuals. That's why in one of the conference of Commonwealth Judicial Education platforms, I raised an issue
Fortunately, all big stakeholders from different Commonwealth jurisdictions were present. Indian judges were also there. Justice Madan Lokur, as a sitting judge of the Supreme Court, was there. Professor Madhav Menon was alive and he was there. I raised an issue that have we ever thought of protecting the right of an invisible litigant? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।